Thank you so much, Hasil Abbas, Rahil Abbas, and Khokar for those inspiring words. Your insights highlights the importance of sustainable development. Now I'm excited to continue our session. I will first introduce myself. My name is Binish Ghulam, a graduate student of forestry from Karakoram International University, Gilgit, and I am your host for today's session. Secondly, I represent the team of Mountain Agriculture Research Center, Gilgit, Baltistan. It's my pleasure to introduce our esteemed speakers of today's session, Mr. Hasil Khan. He is a dedicated scientific officer at Mountain Agriculture Research Center, Gilgit, and completed his master's degree in Japan. He will share insights on our main topic, Chilghauza pine forest, restoration for ecosystems, and improved livelihood of mountains farming communities in Gilgit-Baltistan. So, sir, before that, if anyone have a question, please write it down in notepad. We will have a question and answer sessions in the last of our presentations. So, sir, now I will hand it over to you, Mr. Hasil Khan. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Assalamu alaikum to all. Today I'm going to talk on Chalghoza pine forest. In my topic, there is two parts. The one is restoration for ecosystem. The second part is improving the livelihood of the mountain farming communities in Gilgit-Baltistan. Let's proceed toward the introduction. As we know that Chalghoza pine, you can see, जैसा देख सकते हैं कि आपके राइट साइड पे यहाँ पे चलगोजा का एक ट्री है. तो the name of Chalghoza is Pinus gerardiana. इसका scientific name है. Sorry, I will include English as well as Urdu to present my presentation. So, what are the unique features related to Chalghoza pine forest? जैसा कि इसको चैंपियन ऑफ द माउंटेन प्लांट कहा जाता है, बिकॉज इट grows at the harsh environmental conditions and also grow at the dry temperate region across the Himalayan range. This Chalghoza nuts are the high nutritional and medicinal value. If we consider the worth of a single tree, that will produce $44 per year. And according to the production, Pakistan is the second largest producer of Chalghoza nuts. And going toward the characteristic of a plant, the height of the plant is around about 100 feet, more than 120 feet, and इसकी जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 150 to 200 years. And also the plant have the extensive root system that is also called a step root system, because it survives under the harsh environmental conditions, challenging topography. That's why it needs not too much water. It can easily survive on that challenging topography. Next slide, please. If we will look on the ecology
of the Pinus gerardiana. In the right side, you can see the distribution of the Pinus gerardiana, different species which are present across the globe. You can see here on the right hand side. And in Pakistan, you can see in the map, it is distributed in some specific region in Pakistan, which includes Gilgit-Baltistan, Chitral, Waziristan, and in Quetta, जो बलूचिस्तान, in Suleiman mountain ranges. ये सिर्फ वहीं पे पाया जाता है, ये forest. So based on the habitat, the climate of this region where the Chalghoza forest exists is totally dry temperate. The soil in this region is not too much good for the other plants, but the Chalghoza can grow very well in that dry temperate region where the pH level of the soil is acidic, less than 5. And the forest exists at the elevation of round about 1800 to 3000 meter above sea level, and the Chalghoza forest is not growing in an association, but it grow with a cluster of different species like Citrus deodara, juniper, Quercus incana. Next slide, please. If we will look into the conservation status, अगर कंजर्वेशन स्टेटस को हम देखा जाए तो चलगोजा स्पीशीज को इंक्लूड किया गया है IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी 1 because of the following reason. The reasons are deforestation and habitat loss, unsustainable harvesting in the current climate change scenario. What the efforts can be done for conservation, like our organization, Pakistan Agriculture Research Council, Forest Department, other NGOs are doing their best for the conservation efforts. And the another one thing which is very important is the involvement of the local community. Next slide, please. Why Chalghoza nuts are important? Based on the nutrition facts, ingredients, and their percentage, and due to the ingredients present in the Chalghoza pine nuts, wait a minute, please. आप जारी रखें प्लीज. अच्छा, तो इसमें ये होता है कि मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से it is the source of organic food. Yeah, please. And you can see here the ingredients which I have mentioned here in the table, that it contains highest content of fats, which is 49.9%, and also the carbohydrates, protein, moisture contents, and fiber contents are also present. And also, if we can say the health benefit, it is a very good source of antioxidant which prevent the heart diseases, treating infertility. And the ecological role, if we will look into the ecological role,
The forests support the wildlife and also the source for the pollinators. Next slide, please. Okay. नहीं चल रहा है सर आप बोले जाफर साहब स्क्रीन मूव नहीं हो रही आप इसे अपने पास से चलाने की कोशिश करें जका साहब जी सर मैं 1 मिनट दीजिएगा मैं चला रहा हूँ The strategies for restoration ecosystem. What are the strategies? Based on the present status of the existing forest, you can see here in the map that the forest in Gilgit-Baltistan, the total area of GB is 72,971 kilometers square, and the forest area is 3.57%. And remaining area is 85, and around about 90% is mountainous land. And based on the existing forest in the region, what are the strategies for the restoration of the forest? How we can restore ecosystem in the region, Next slide, please. For the restoration, the first intervention is in situ conservation. Through this intervention, we can conserve the flora and fauna within their own habitat by involving the community participation through research and monitoring, and also linkages amongst key stakeholders and upscaling of the local community. And we can also stop deforestation and the technology which is used as IPM for the control of insect pests. And in this way, we can conserve the forest in their natural habitat through in situ conservation ways. The next slide, please. The next step for ecosystem restoration is establishment of the nurseries, which is very important and mandatory. By agar nurseries nahi honge, to how we can plant chalgozé in the natural habitat. That's why our organization, Pakistan Agriculture Research Council, already started work on the growing chalgozé plants through establishment of nurseries at different locations, which you can see on the right side. We have established this nursery at Jagalot. And we have produced around about 10,000 plants at Jagalot under my supervision. And we are planning to propagate and transplant these plants to the natural habitat where the chalgozé forest is growing. And also how we can restore the ecosystem through the existing natural regeneration by protecting the existing natural regeneration, enclosure natural regeneration, and also IPM techniques by using different silviculture practices. By applying these are the practices through which we can conserve our ecosystem, especially forest ecosystem. Next slide, please. What are the sources of the livelihood improvement? As we can say that China imported तकरीबन ये जो mentioned हैं देखें यहाँ पे round about 4,290 tons of nuts
इसके जो लागत बनती है 44 बिलियन US डॉलर, अकॉर्डिंग टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टम ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इतने टन यहाँ से इंपोर्ट कर दिए गए हैं, यहाँ ये जो चलगोजा नट्स स्पेशली। अब चलगोजा नट्स मार्केटिंग, जब अब देखें ये जो चलगोजा नट्स हैं उसकी मार्केट होगी तो अल्टीमेटली दिस इज द सोर्स, marketing of the nuts is the source for the livelihood improvement, through which जिससे आवाम के इनकम में इजाफा होगा, which ultimately boost of the economy of the country, through which the living standard of the mountain farming community will also be enhanced. Next slide, please. Strategies कौन से हम अपना सकते हैं through which the livelihood of the mountain farming community can be improved या boost up. These are the strategies. कौन से हैं वो? सस्टेनेबल, इफ अगर हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट की तरफ हम जाएंगे तो हम लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि साइंटिफिक टूल्स का हम इस्तेमाल करें, अपस्केलिंग नॉलेज ऑफ द लोकल कम्युनिटी, हम यूथ को इस्तेमाल करें, यूथ इन्वॉल्वमेंट, मार्केट एक्सेस हो, स्टेक होल्डर्स अवेयरनेस हो। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड इंटरवेंशन होने चाहिए वहाँ पे, और जो नट्स है उसकी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक ई मार्केटिंग होनी चाहिए, और ऐसी पॉलिसीज बनाने चाहिए, और वहाँ पे रहने वालों के लिए सब्सिडीज दी जानी चाहिए ताकि वो फॉरेस्ट को कंजर्व करे वहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर the ecosystem restoration? As we know the current climate change scenario, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज अनसर्टेनिटी हम देख सकते हैं, इसमें एक्सट्रीम वेदर पैटर्न आ जाता है, जिसकी वजह से जिस क्लाइमेट चेंज इनकी वजह से एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेट अनसर्टेनिटी की वजह से फ्लड्स आ जाते हैं, लैंडस्लाइड्स और खुशक साली, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली लॉस ऑफ द हैबिटेट in the forest. Next slide please. सबसे आजकल जो ग्लोबल जो इशू है which is climate change. As we know that the temperature is going to be increases, जो कि 1 से लेके 3 डिग्री सेंटीग्रेड for the last 21st century इस IPCC के रिपोर्ट के मुताबिक ये इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से which affect the biodiversity of the globe. ये जो इंफॉर्मेशन है which is very important for the conservation of the flora and fauna of the earth. Next slide please. I also conducted एक मैंने रिसर्च कंडक्ट किया था when I was in Japan. Then based on the अब आज जो टॉपिक है वो चलगोजे पे ही बात कर रहे हैं, तो मैंने भी अपना जो स्टडी फोकस किया था कि इसी चलगोजे पे काम करूं। मेरा माई स्टडी एरिया वाज आल्सो गिलगित बल्तिस्तान, द स्पेसिफिक चलगोजा फॉरेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट द्यामर। ये जो पिक्चर हमें दिखाई देता है ये कि प्रेजेंट हैबिटेट है। अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमने क्या किया कि थ्रू मॉडलिंग के जरिए इसको फिर हमने मैक्सन मॉडल, एक अलग एक टॉपिक है, इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, मैंने खुद इस पे काम किया है। उसमें ये है कि इसको मैक्सन मॉडलिंग के जरिए हमने इसकी फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूशन इन 2050 एंड इन 2080 में हमने चेक किया कि आया जो प्रेजेंट हैबिटेट है वो थ्रू मॉडलिंग के जरिए उसमें क्या इम्पेक्ट हो रहा है विद क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स।
तो हमने देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो प्रेजेंट हैबिटेट था, जो प्रेजेंट हैबिटेट है वो इन 2050 और 2080 में ये शिफ्ट होता जा रहा है टुवर्ड ईस्टर्न पार्ट। मतलब ये है कि जो प्रेजेंट हैबिटेट है वो अनसुटेबल होता है और न्यू हैबिटेट उसके लिए फाइन होता है। मतलब न्यू हैबिटेट आइडेंटिफाई होते हैं और टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ड्यू टू द चेंजिंग क्लाइमेट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें दूसरा जो एक चैलेंज है, चैलेंजेस में एंथ्रोपोजेनिक, जिस तरह आपको पता है ये अहम मसला जो चल रहा है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज विच लीड टू deforestation, degradation of the ecosystem. Here, some of the points which have mentioned that are interlinked with the influence of human being. Next slide, please. इसी तरह, what are the other challenges which the forest is facing? These some of the important challenges is socio-economic issue, institutional issues, and biological, some of the regional and scientific due to the lack of scientific research. These are the some challenges which have to face for the ecosystem restoration. Next slide, please. अब हम क्या करें? Way forward. How we can restore? What are the challenges? Based on the facts and the finding, based on the issues, तो हम कर सकते हैं for ecosystem restoration and for improvement of the livelihood of the farming community of this region. उसके लिए हमें सबसे पहले ये होगा कि we have to work and the government have to launch a projects that will restore ecosystem in the region and also move toward the sustainable management, which will enhance. If the forest will be sustainably managed, then the production in that region will be enhanced, and through which the livelihood of the local community will be improved. Ultimately, we are moving toward the SDGs targets. To achieve the SDGs targets, these are the way forwards. We have to think and we have to work for sustainable ecosystem management. Thank you for your attention. जी सर, मैं जी सर, मैं टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन द लोकल सप्लाई चेन ऑफ चलगोजा पाइन नट्स इम्प्लीकेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को इसके चलगोजा के जो हमारा जो लोकल सप्लाई चेन है, जो मार्केट है, जहाँ पर पैकेजिंग है, हार्वेस्टिंग है, इस हवाले से आप सब लोगों को मैं बताऊंगा। पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। माय नेम इज़ नेमतुल्ला, रिसर्च फेलो एट PRC MRC जुगलोट गिलगित बल्तिस्तान, MPhil हॉर्टिकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। जो मेरा इस प्रेजेंटेशन में, इस वेबिनार में आने का मेरा मेन जो इस वजह से हूँ कि ये मेरा जो थीसिस था, टॉपिक था, ये मेरा स्टोरेज पोटेंशियल ऑफ रोस्टेड एंड नॉन रोस्टेड चलगोजा पाइन नट्स अंडर डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन के ऊपर मैंने ये अपनी एजुकेशन के उसकी थीसिस के दौरान, रिसर्च के दौरान मैंने ये किया था। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता दूंगा। तो ऑल ओवर सर, इसका एब्स्ट्रैक्ट ये है कि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है हमारे लोकल की गिलगित बल्तिस्तान में, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट द्यामर में, वो ये चलगोजा है। इस हवाले से ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान में ये मोस्टली द्यामर में ही हमारा ये प्रोड्यूस होता है ये। और जो चिलास जो हमारी है वो पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है इस हवाले से। और इस दूसरी बात, ये पाकिस्तान जो हमारा है ये लार्जेस्ट नट प्रोड्यूसर है। इसकी नट साइज़ के हवाले से पूरे दुनिया में पाकिस्तान का जो चलगोजा नट है उसका साइज़ सबसे बड़ा होता है।
इस वजह से जो 95% जो चाइना जो चलगोज़ा यहाँ पर हमारे पास प्रोड्यूस होता है वो सारा चाइना एक्सपोर्ट होता है। ये लोग मार्केट में एक्सपोर्टर जाकर बैठते हैं, वो इसी फ्रेश कंडीशन में ख़रीदते हैं और इसको चाइना कंटेनर में डाल के सीधे चाइना पहुँचा देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके इश्यूज इश्यूज भी इसके सस्टेनेबल इसके प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं, और लोकल ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ ये सारा ये काम होता है, और इसकी वजह से लॉसेस बहुत हैं। ए, साथ साथ ये अगली स्लाइड का सेकंड स्लाइड पे आ जाए। हाँ ये तो ये लोकल सप्लाई चेन, ये चरगोजा की ये लोकल लोकल सप्लाई चेन है। ट्री विद मेच्योर कॉन्स, ये एवरग्रीन ट्री होती है चरगोजा की, जैसे हजरत खान साहब ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था। और ये 12 से 12 मीटर तक लॉन्ग बड़ी टेम्परेट रीजन की बड़ी एवरग्रीन नीडल लाइक लीव्स की ये ट्री होती है। अगस्त सितंबर में कौन इसके ट्री के ऊपर मेच्योर होते हैं। हार्वेस्टिंग मेथड हमारे ये जैसे कि आप ये ग्राफ में ये तस्वीरों में ये आप देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल मेथड हार्वेस्टिंग है। कौन कलेक्शन ये स्टार्ट करते हैं सितंबर अक्टूबर में, हमारे कौन विलेजर्स जो है कौन कलेक्शन या कॉन्ट्रेक्टर्स के जरूर या विलेजर्स खुद करते हैं। सितंबर अक्टूबर में इसको कौन कलेक्शन शुरू होती है, और इसके लिए ये पोल प्रूनर्स और ये लेडर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं लोग, इसको ट्री से डिटेच करते हैं। क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड, इसकी वजह से ट्री को ये ब्रांचेस टूट फूट का शिकार होती हैं, और लोगों के एक्सीडेंट्स के बहुत चांसेस होते हैं। लोग कभी कभार लोग इसमें ज़ाया भी हो जाते हैं। ये बड़ा ये टफ मुश्किल मुश्किल काम है, और इसलिए ये इस चीज़ आपको अंदाज़ा है कि ये महंगी मार्केट में महंगा भी है। तीसरा इसका स्टेप होता है कौन ड्राइंग एंड नट एक्सट्रैक्शन होता है, जिसको उनको हम लोकल जो हार्वेस्ट करते हैं, ये सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं, इनको हार्वेस्ट करके एक जगह पर जमा करते हैं, उनको सन ड्राइंग के लिए ओपन करके रखते हैं। सन ड्राइंग से ऐसे ये होता है हीट के जरिए इसके जो शेल्स है वो ओपन हो जाती हैं, और इसके बाद इसको किसी स्टिक से हीट करते हैं या कोई इसको वो करके कौन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है ड्राइंग ऑफ पाइन नट्स होता है। तो ड्राइंग ऑफ पाइन नट्स लोकल सन ड्राइंग होती है। ये लोकल ट्रेडिशनल मेथड से नेचुरल सन के रूप या रूप पे रखते हैं या किसी ग्राउंड में रखते हैं। 4 से 7 दिन में के अंदर अंदर ये इसको ये ड्राई करते हैं। अगर ये ड्राई नहीं करते हैं तो ये बोरी के अंदर जुड़ के जो सेक्स होती है उसके अंदर पे करते हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये फंगस का अटैक करता है और सारा ये ज़ाया हो जाता है। क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग के हवाले से भी जो लोकल जो सप्लाई चेन के अंदर जो होता है जो ट्राइबल मेथड होता है जिसको पनोडी भी कहते हैं, ये आपके सामने तस्वीरों में आपको लोगों को मेरे ख्याल में नज़र आ रही हैं। इसी लोकल इसी तरह साफ करते हैं, और कोई मशीनरी वगैरह नहीं होती है। ये नेचुरल नेचुरल उस पे ये पनौती इसी तरह ये इसको साफ करके बोरी में पैक कर देते। पैकेजिंग के हवाले से भी सिर्फ हमारी ये देसी जूट्स की सेक्स जो बोरियां होती हैं इनके अंदर पैक होता है। आगे सामने आपको ये पिक्चर में क्लियर नज़र आ रहा है। दूसरी स्टोरेज या पाइनट से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में चिलास में जो दुनिया की पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ पर न कोई स्टोरेज की फैसिलिटी भी नहीं है, पैकेजिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। लोग बोरियों में पैक करके ला कर रखते हैं, वहाँ से एक्सपोर्टर खरीद के लेके जाते हैं। इसी तरह सारा ये जो हमारा जो प्रोड्यूस है जो जिसको हम कहते हैं कि मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रूट इन द वर्ल्ड कहते हैं ये इसको चलगुजे को, तो ये सारा इसी तरह ये ज़ाया हो जाता है। ना कोई किसी गवर्नमेंट की तवज्जो है ना हमारे जो लोकल जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भी कोई इस चलगोजे के ऊपर कोई इंटरेस्ट है वो नज़र नहीं आ रहा है। पिछले साल है कि हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है चिल्लास के, उन्होंने एक कोशिश की थी कि 10 अक्टूबर के महीने में कि चलगोजा डे मनाते हैं, चलगोजा डे पे मना के सपोर्टर्स को बुलाया था। साथ में फार्मर जो हमारे लोकल कम्युनिटीज उनको बुलाया था कि अपने अपने आप चैलेंजेस के आपको मसाइल क्या क्या पेश आ रहे हैं इस चीज़ को हार्वेस्ट करने में, मार्केट तक लाने में, ड्रोन कंट्री से लाए जाने में। तो इस हवाले से उन्होंने एक साल किया था। इस साल तो बिल्कुल वो एडमिनिस्ट्रेशन भी गायब हो गई। जो लोकल जो एक्सपोर्टर्स थे वो तो अपना उसी तरह जो पुराने ट्रेडिशनल वेज है इन्हीं के ऊपर वो अपना काम चला रहे हैं अभी तक। तो अगली स्लाइड कर दें सर। अच्छा ये चैलेंजेस जो लोकल सप्लाई चेन के अंदर चैलेंजेस के हवाले से जो शॉर्ट सा ब्रीफ मैंने आप लोगों को ये वैल्यू चेन के हवाले से ये सप्लाई चेन के हवाले से बता दिया लोकल। अब इस चैलेंजेस क्या क्या आते हैं।
मेन चैलेंज जैसे हासिल खान साहब ने बता दिया कि डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज तो है ही है, ये तो पूरी दुनिया में है। इसके बाद जो दूसरा एक मेन चीज़ है सर, हम जब भी हम यहाँ से चिलास से जो पाकिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, यहाँ से जो एक्सपोर्टर जो ट्रेडर्स यहाँ से खरीद के दोनों कंट्रीज जैसे लाहौर की मार्केट है, पेशावर की मार्केट है, ये रावलपिंडी की मार्केट है, ले जाने की कोशिश करते हैं। तो बीच में हमारा पिंडी और गिलगित के बीच में केपीके आता है। केपीके की जो पुलिस होती है और जो वो होते हैं, वो जो जो भी चल गुजारता है गाड़ी खड़ी खड़ी करते हैं और उनसे एक टैक्स, अब भत्ता भी कह सकते हैं आप, भत्ता लेते हैं। आपने चल गुजारा इतना लाया, इतने पैसे दे दो, आपका माल छोड़ देंगे। यही यही ये इशू पिछले साल भी गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे भी मैंने खुद उठाया था स्टेज के ऊपर जाके, ये इश्यूज है, ये केपीके गवर्नमेंट के साथ ये बैठ के इनको हल किया जाए। हमारे जो लोकल ट्रेडर्स हैं इनको ये बड़े मसाइल है कि इधर से माल लेके जाते हैं, वो टन को जितने होने चाहिए। जी नेमत नेक्स्ट। दूसरा सर, इसके बाद ये है लेक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज, बिल्कुल इधर नहीं है चिलास में, कोई स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग के हवाले से, वैल्यू एडिशन के हवाले से यही चलगोजा चिलास में प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर आके पैक होता है, फ्रेश चाइना चला जाता है, चाइना में वो प्रोसेस होता है, इसकी साल्टिंग होती है, इसको धोया जाता है, इसको कलर पेंट करके शापर में पैक करके दोबारा पिंडी के मार्केट में, गिलगित के मार्केट में वही चलगोजा आके हमें 12,000 15,000 की केजी पे हम हमारे जो लोग ऊपर जो बैठे हैं वो खरीद के खाते हैं। तो ये बेहतर नहीं होगा कि चिलास में ये हम इधर कोई ऐसे पैकेजिंग मटेरियल और इसकी प्रोसेसिंग के वैल्यू एडिशन करें कि यही प्रोड्यूस, यही से वो वैल्यू ऐड होके चाइना चला जाए और उनको हम डबल, इससे डबल ट्रिपल कीमत पर उनको भेजें। तो रिमोट सर जियोग्राफी के हवाले से है कि उसमें ये बड़ा पहाड़ों के ऊपर 1800 से लेकर, जैसा खान ने बताया, 1800 से लेकर 3,000 मीटर्स या फीट्स बुलंदी पर ये उगता, ऊपर से उसको हार्वेस्ट करना, फिर इसको टेक्निकल वेज के जरिए उठा के रोड तक ले जाना, फिर गाड़ियों पर लोड करके कौन को मार्केट में पहुंचाना, फिर एक्सट्रैक्ट करना, इतना ये बहुत टफ काम है। इसके वजह से हमारे रोड्स खराब है, मार्केट तक कोई एक्सेस नहीं है, पूर एक्सेस नेट एक्सेस नहीं है, पूर एक्सेस है। तो लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कंपेन्स, ऐसे ट्रेनिंग्स और कंपेन्स रख के लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। इस हवाले से हम कि ये एक ये नायाब चीज़ है, इसकी हमने खुद हिफाजत करनी है और इसको आगे हमने एक मिल के लेके चलना है। तो अगली स्लाइड करने पर, इसी जहाँ पर आप देखें चैलेंजेस होते हैं, वहाँ पर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं कि जो हमारे लोकल्स के लिए हमारे लिए चैलेंजेस है, तो बाहर को एक्सपोर्टर और गवर्नमेंट के लिए वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कि उन चैलेंजेस को कैसे अपॉर्चुनिटी उनको बदल करके उनको हल कर सकते हैं। इसी वाले से हम इम्प्रूव हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को लोगों को ला के सिखाएं, उनको इंस्ट्रूमेंट्स दे, इस तरह हार्वेस्ट करना है, अपने ट्री को डैमेज करना है। अगर एक ट्री डैमेज हो गया तो वो 25 से 30 साल लेते हैं वो दोबारा मेच्योर होगा, वो दोबारा फ्रूट बेयरिंग तक। तो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग के यहाँ पर फैसिलिटी, ड्राइंग और शेलिंग, क्लीनिंग और पैकेजिंग होने चाहिए। एफएओ ने ये तक 2-3 साल पहले एक रोस्टिंग के हवाले चलगोजे का एक प्रोजेक्ट था चिलास में, लगाया था। पहले साल थोड़ा चला, अगले साल बिल्कुल वो ये गर्स के थ्रू मैंने ख्याल में लगाया था, वो फिर वो लगा, अभी वो खड़ा पड़ा है, माल आता है चिलास में, वो सारा इसी तरह चला जाता है, ज़ाया हो जाता है। वो मशीन उनके पास पड़ी हुई है, ना कोई वो चलाने वाला है, ना कोई टेक्निकल बंदा है, बस इसी तरह पड़ी हुई है, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इसके बाद वैल्यू एडिशन है, इसके बाद कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट उसको एफिशिएंट करके हम रूट्स को बराबर कर हम मार्केट तक रसाई दिलवा सकते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के, वो तो फार्मर्स अपने लेवल पर, जो ये तो फार्मर्स नहीं कह सकते हम कि ये, क्योंकि ये कुदरती तौर पर पहाड़ों पर उगता है, तो जो हमारे लोकल कम्युनिटी होती है वो मिल के ये बड़े मनज़म तरीके से उसको हार्वेस्ट करवाती है और मार्केट तक पहुंचाती है। वो अपने काम सही से कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर भी उनके हाथ बटाए तो इंशाल्लाह ये काम हम सब मिलकर कर सकते हैं। लोकल और रीजनल ब्रांडिंग ब्रांडिंग इसी, अगर इसको ब्रांड बना के कि कोई लोकल इसका नाम दे के, ऑर्गेनिक फूड्स का नाम दे के, इस तरह करके ना हम ये ई ट्रेडिंग और इस पे आ सकते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट डेवलपमेंट, ये सबसे बड़ी मार्केट चाइना है। चाइना यहाँ से पाकिस्तान का तकरीबन 90% जो आता है वो चाइना एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद मिडिल ईस्ट, यूरोप, मिस्र, जॉर्डन को ज़्यादा जाता है। ये चीज़ें उनको हम उनके साथ मुआहदे करें गवर्नमेंट लेवल पे कि इनको उधर पहुंचा सकते हैं। और रिसर्च कोलेब्रेशन के जरिए, जैसे कि मैंने मेंशन किया, PRC R&D इस चीज़ इम्प्रूव यील्ड के लिए और हासिल खान साहब पे काम कर रहे हैं। इसकी
नर्सरी रेजिंग, और हम हमारा ये प्रोग्राम है कि नर्सरी रेज करें और इन्हीं प्लांट्स को इन्हीं के ऊपर जो कला जोन है उधर जाके उनको लगाएं और इनको बडिंग और के जरिए उसको हम कामयाब करें। हम ये कोशिश कर रहे हैं। हासिल खान साहब इस पोजीशन में इंशाल्लाह तो कामयाब होंगे। तो इसके बाद सर ये अब तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कौन ऊपर लगी हुई है। इसको फिर इसके बाद हार्वेस्ट करके सेट्स के अंदर पैक करके उसको लेके आगे इसको ड्राई करते हैं। ड्राई के बाद इसको पैक करके हम ये मार्केट तक पहुंचाते हैं। एक्सपोर्ट के हवाले से भी ये चाइना को तकरीबन ये 2020-23 में ये 4,290 टन से तकरीबन 44 बिलियन यहाँ से गया है। वजीरिस्तान साइड से आता है, ये चिलास से जाता है। इसके बाद दूसरा यॉर्डन है, सऊदी अरबिया को जाता है, यूएई को जाता है। 2023-24 में टोटल शिपमेंट 1673 शिपमेंट से पाकिस्तान से गई हैं मुख्तलिफ कंट्री को, जिसमें चाइना नंबर 1 है। चाइना को सबसे ज़्यादा गया है। इम्पोर्टिंग कंट्रीज तकरीबन सिर्फ चलगोजे की 33 के मुल्कों को यहाँ से पाकिस्तान से चलगोजा जाता है। तो एक्सपोर्टर्स टोटल 2023-24 में ये डेटा के मुताबिक तकरीबन 102 एक्सपोर्टर्स थे टोटल। तो मेजर एक्सपोर्ट कंट्रीज में पाकिस्तान वे वाहिद चीज़ है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान नंबर 1 है अपने एक्सपोर्ट में। सारा चलगोजा यहाँ से एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान नंबर 1 है, दूसरे नंबर पर रशिया आता है, फिर तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका आता है। तो मेरी एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन ये थी। तो कोई क्वेश्चन वगैरह तो कोई पूछ सकता है। थैंक यू।